हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछली वीडियो में 365 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट टॉपिक लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं सेकंड टॉपिक सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस कर रही हूँ और आप देख लीजिए इसमें। हाँ जी, इसमें है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। यूनियन कैबिनेट हैज़ approved an extension of the term of Justice Rohini Commission by 6 months, 6 मंथ के लिए जो है वो अवधि बढ़ा दी गई थी इनकी। उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन बैकग्राउंड में हम देख लेते हैं। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज सेटअप इन 1953 अंडर काका कालेकर। अगर सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो। उसके बाद है 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर बीपी मंडल। उसके बाद 1992 में 27% रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लास 4। उसके बाद 1992 में द क्रीमिलियर क्राइटेरिया इवोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा सानी जजमेंट 1992 में। ठीक है, उसके बाद ये क्रीमिलियर के बारे में देख लेते हैं पहले। हाउस होल्ड with an annual income of 8 lakh and above is not eligible for reservation. The term creamy was introduced by सत्तन कमीशन 1971 में। उसके बाद other condition for the reservation laid down in Indasani case reservation to socially and educationally backward classes, 50% cap on vertical reservation. There should be no reservation in the promotions में कोई reservation नहीं ओबीसी क्लासेस के लिए। उसके बाद जस्टिस रोहिणी कमीशन में क्या है, जूनियर गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4 member कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी in 2017 under Article 340 with an aim to improve the equitability of sharing of benefits among OBCs. OBC is a collective term used by the government to classify castes which are educationally or socially disadvantaged. OBCs are referred to as social and educationally backward classes. उसके बाद आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मैंडेट ऑफ द कमीशन क्या है, एग्जामिनिंग द टेंथ ऑफ इनक्यूटिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन, वही जो 1992 के अकॉर्डिंग among the caste or communities with reference to the central OBC list. उसके बाद वर्कआउट फॉर द मैकेनिज्म क्राइटेरिया नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। उसके बाद द कमीशन हैज़ प्रपोज टू डिवाइड ओबीसीज इंटू 4 कैटेगरीज नंबर 1 2 3 4 स्प्लिट 27% इंटू 2 6 9 एंड 10% रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो हम ये देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सेटअप कब हुआ था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप 1993 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत है जो ये बना था अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद की फंक्शन परफॉर्म बाय द पैनल इन द केस ऑफ ग्रीवेंसेस related to non-implementation of reservations, economic grievances, violence, etc. People will be able to move the commission. The inquiry into complaints of deprivative of rights and safeguards. Then next, according to NCBC, 11 states UTs, Andhra Pradesh, Telangana, Puducherry, Karnataka, Haryana, Jharkhand, West Bengal, Bihar, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu have subcategorized OBC for reservation in state government on institutions. उसके बाद डेवलपमेंट्स विद रिगार्ड ऑफ 102nd अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 338B and 342A in the Constitution. उसके बाद Article 338B deals with the structure, duties, powers of National Commission Backward Classes, and 342A with 2 clauses give President the power to notify a class as
SEBC and the power of Parliament to alter the central SEBC list. Recently, Ministry of Social Justice and Power has formed the amendment to Article 342A, 127th Amendment, to introduce a third clause, Article 342A, 3 Clause 3, to restore power to state to identify OBCs to be included on the respective state list. कि मतलब इंश्योर करेगा, पावर करेगा कि क्या वो इंक्लूडेड है स्टेट लिस्ट में. Until now, state government were free to decide which caste should be part of OBC list in the on state. Separate OBC lists are drawn up by the center and each state concerned since 1993 से ये. उसके बाद आर्टिकल 15 क्लास 4, 15 क्लास 5, 16 क्लास 4 expressly conferred power on a state to identify and declare the list of socially and educational backward classes. However, the Supreme Court ruling on the Maratha reservation held that only the president can declare any community as OBC and that too only on the recommendation of National Commission for Backward Classes. Additionally, Supreme Court have also remarked about the being in future a single list of OBCs that should be issued by the President on the recommendation of a National Commission for Backward Classes. उसके बाद रिलेटेड न्यूज़ क्या है, कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं. Other backward classes and economically weaker section get quotas under all Indian quota scheme for medical courses. Medical courses में कोटे के लिए ही. इसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड 27% reservation for OBCs and 10% quota for economical weaker section in all India quota scheme for undergraduate and postgraduate state and medical and dental colleges. उसके बाद ऑल इंडिया quota scheme was introduced in 1986 for domicile-free merit-based opportunity to students from any state to study in good medical colleges in any other states. It comprises 50% of 50% of UG undergraduate and 50% PG postgraduates in government medical colleges. Initially, there was no reservation in the All India Quota scheme up to 2007. In 2007, reservation for SCs 50% of All India Quota and STs 7.5% was made under the scheme. Article 15 and special provisions for education. Article 50 Class 5 provides for special provisions for the advancement of any socially and educational backward classes of citizens on or for the scheduled class and scheduled tribes for administration or to education institutions. The education institutions के लिए based on the provisions under Article 15 Class 5, 27% OBC reservation in higher education institutions, including Central Government Medical Institute, was implemented in 2006 or 2007, but it didn't include medical and dental course seats under all India quota for OBC in states. In 2009, through 103rd Constitutional Amendment Act, 10% reservation for EWS was extended in higher education constitution under Article 15 Class 6 and B, but it also excluded अब ध्यान दीजिए excluded medical and dental courses seats under the all India quota for EWS. उसके बाद reservation for OBCs in local body polls. अब ये बात कर रहा है reservation of OBCs in local body polls. Center is considering moving a review petition before the Supreme Court to allow political reservation of OBCs in local bodies and municipal corporation for the time being till the states comply with the triple test criteria. अब देख लीजिए ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया, वो बाद में दिखे यहाँ पर लास्ट में. अब लिखते हैं earlier SC Supreme Court had decided to strike down 27% reservation in favor of other
backward classes in local bodies made by Maharashtra and Madhya Pradesh governments. The SC orders are based on the Krishnamurti judgment, stressing that barriers to political participation are not on the same character as barriers that limit access to education and employment. Then, the triple test included setting up a dedicated commission to conduct a contemporaneous, rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness as regards local body within the state. Then specify the proportion of reservation required to be provisional to local body, while as per recommendation of the commission मतलब commission की recommendation पे, then reservation should not exceed an aggregate of 50% of seats reserved in favor of SC STs and OBC taken together. 50% से ज़्यादा exceed नहीं करनी चाहिए. थैंक यू. और अगर ये और आगे ये बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूँगी. थैंक यू.